गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भुजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि प्रदीप विजय के द्वारा हमारी सेल्फ मास्टरी रिट्रीट, वर्चुअल रिट्रीट 11 दिन की हमारी कल से शुरू हो चुकी है। जिन्होंने भी कल का एपिसोड नहीं देखा होगा वो ज्ञान भारत यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। कल उन्होंने हमें कुछ एस्पेक्ट्स को फॉलो करने के बताए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था हमारा आहार, कि जितना हल्का आहार हम इन 11 दिनों में लेंगे उतना ही डीप मेडिटेशन भी कर पाएंगे और जो हमारी इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होगी उसके लिए भी हम पर्याप्त ऊर्जा संचित करके रख पाएंगे। क्योंकि जो भी हीलिंग होती है उसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है, और यदि हम ज्यादा आहार ले लेंगे या गरिष्ठ भोजन कर लेंगे तो हमारा पूरा पाचन क्रिया में ही हमारी एनर्जी चली जाएगी। तो पहला हमारा आहार था। दूसरा हमें बताया गया कि मेडिटेशन हमको करना है। रात को सोने के ठीक पहले 1 घंटा मेडिटेशन, सवेरे उठते साथ ही कम से कम आधा घंटा या मैक्सिमम 1-1.5 घंटा आप कर सकते हैं तो आप करिए। तीसरा एस्पेक्ट के बारे में बताया था माइंडफुलनेस। तो हमको कोई भी दिन भर में एक एक्टिविटी को फुली माइंडफुल होकर काम करना है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे आपका नहाना हो, चाहे आपके घर की सफाई हो। कोई भी एक क्रिया, एक कार्य को आपको 100% फोकस होके करना है। 2-3 दिन के बाद जब आप योग्य हो जाएंगे तो दूसरी एक्टिविटी को भी आप फॉलो करेंगे। ऐसे करते हुए 11 दिन के अंदर हमको 3 एक्टिविटी दिन भर में करनी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा माइंडफुल हो पाए। जितना वर्तमान क्षण में रहते हैं हम उतनी ही एनर्जी लेते हैं, और यदि इस कार्य के समय में आपकी ध्यान भटक जाता है तो आपको ब्रेथ को पकड़ना है। और सर ने कहा था चौथा, जर्नल लिखना। हर एक को अपनी एक डायरी बनानी है और अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस, अपने माइंडफुल के एक्सपीरियंस, साथ ही हमारे जो इमोशन सरफेस पे आएंगे उसके ऊपर भी हमको जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं या जो भी हम एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने इमोशन का, वो सभी कुछ लिखना है। क्योंकि जब हम अपने कमियों को, अपने प्रॉब्लम्स को हम जब जान लेते हैं तो हमारा आधा निदान उसी समय हो जाता है। तो ये चारों चीजें मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही तन्मयता के साथ पूरे प्रेम पूर्वक अपने जीवन में उतारेंगे। कम से कम ये 11 दिन के द्वारा हम अपने में अपनी इम्प्रूवमेंट हम देख पाएंगे, तभी हम और ज्यादा अपनी लाइफ में इसको उतार पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज सेकेंड डे है जिसमें सर हमको अपने बारे में, स्वयं को जानने के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि पहले मेडिटेशन होगा, फिर हमारा ज्ञान का सत्र होगा। तो हमारे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वेलकम 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 प्रदीप सर, वेलकम टू ज्ञान भारत। Namaste to all of you. नमस्ते। We will start the meditation. Yes sir, मैं म्यूजिक प्ले कर देती हूँ। So drink some water, sit comfortably. Close your eyes. Relax your entire body. For the next 1 hour, just don't open your eyes, come what may, and make an effort to be with your breath, natural breath. The more you are with your breath, the more your mind naturally becomes empty. Let your back, your neck, your shoulders completely relax. Just focus on your breath.
30 seconds. Gently place your hands on your eyes for 10 seconds. Five, four, three, two, one. You may slowly open your eyes whenever you're ready and drink plenty of water. Okay, friends, we have done 1 hour meditation. So stretch yourself. You can stretch your arms, shoulders. And take a pen and a book and be ready. Every day we will discuss something very important topic, interesting topic, and we'll analyze the details of it. So today we are going to discuss about enlightenment, desires, and the obstacles of enlightenment. फ्रेंड्स सर बोल रहे हैं अपने शरीर को थोड़ा सा शिथिल कर ले, स्ट्रेच कर लीजिए अपने कंधों को और पैरों को जो थोड़े सुन्न पड़ जाते हैं मेडिटेशन के दौरान, उनको ठीक कर लीजिए, पानी पी लीजिए। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारी इच्छाएं, हमारी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एनलाइटमेंट में बाधा डालती हैं। तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और उन सभी चीजों को नोट करें। So fundamentally, let us understand the desires. Even to get enlightened is also a desire. So let us understand the desires. The desires of men, both man and woman, the desires can be classified into 2 categories. The desire which seeks enlightenment and the desire which seeks the nature. In other words, the desire which seeks what is within you and the desire which seeks what is outside of you. So the desires can be classified into 2 things. Go ahead, ma'am. सर बोल रहे हैं मौलिक रूप से हम जाने की एनलाइटमेंट की भी एक डिजायर होती है। तो ये 2 तरीके से हो सकती है डिजायर, यानी कि इच्छा। एक है एनलाइटमेंट की और दूसरा है कि क्या तुम्हारे अंदर है, क्या तुम अंदर हो और क्या तुम बाहर हो, क्या। So if you consider the soul evolution, right from the infant soul, baby soul, to an old soul, enlightened soul, every human go through this process. And in every stage, there are desires. In the beginning stages, the desires are the outside things, desire for money, name, fame, pleasures, which is external to the man.
which is in the nature. What is outside is what is in the nature. So in the beginning stages of the soul evolution, the desires are always external. And once all the external desires reaches a saturation point, a saturation is something that you are filled with it. For example, if you take a sponge and dip it in water, the sponge is saturated with water. The sponge is full of water. The sponge cannot take any more water because it is already full with it, saturated with it. So once the man in his infant soul, baby soul, young soul, mature soul, he has got with all the name and fame, with the possessions, with the power, with the authority, everything, he has got whatever he wants, but still something is lacking. So he got saturated with the external things. Then his longing to go within happens. Then the desire to seek the enlightenment happens. The beginning of the seeking of the truth happens when man is saturated with the external desires. तो सर कह रहे हैं कि जैसे कि आप लोग सोल इवोल्यूशन में जानते हैं कि पहले इन्फेंट सोल के रूप में आती हैं, फिर बेबी, यंग, मैच्योर होते हुए जाते हैं, तो हर स्टेज में, हर अवस्था में अपनी अपनी एक डिजायर होती है। शुरू के अवस्थाओं में हमारी बाहरी दुनिया की तरफ की इच्छा होती है, अर्थात नेचर से, जैसे मनी, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, संपत्ति इकट्ठा करना, ये सब इच्छाएं होती है। शरीर की इच्छाएं, ये सभी आपकी इच्छाएं होती हैं। पर जब पूरी बाहर की इच्छाएं से आप संतृप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो जैसे बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे एक स्पंज को पानी में रख दिया जाए, तो जितना उसकी कैपेसिटी होती है वो पानी पी लेता है, पर उसके बाद अब वो पूरा सैचुरेटेड हो गया है। तब उस आत्मा को अंदर की तरफ, अर्थात उसकी एनलाइटमेंट की इच्छा जागृत होती है, सत्य की तरफ बढ़ने की इच्छा शुरू होती है। तो वो शुरुआत है जब बाहर की पूरी इच्छाओं को पा लेता है। So the desire for enlightenment, in other words, simply means the desire to know the self, the desire to know the truth. What is the ultimate truth? Or in simple words, this question starts coming in the human life. What am I? Who am I? Where do I come from? What is birth? What is death? What happens after death? What is this life? And why there are miseries in human life? And what is the source of the misery? Is it self-created, or is it destiny? Is it a karma, or is it some God who is designing all those things? Who is God? So these fundamental questions, when these fundamental questions pop up in the human, then he is looking to study his own self. So the study of the self is nothing but inner journey or enlightenment. So that is also a desire, the desire to know the truth, the desire to know who am I. So this is the desire where the answers are only from within. The questions are from the soul, but the answers also are from the soul. So this is the inner desire. सर कह रहे हैं कि जब ह्यूमन को पहली बार लगता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, मृत्यु क्या है, और मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन क्या है, और ये जो ह्यूमन के जो मानव के जो दुख है उनका स्रोत क्या है, और क्या ये दुख हमने खुद पैदा किए हैं या हमें गॉड ने, हमें ईश्वर ने दे दिया है, या कोई पावर है जो हमें दुख के लिए दुख हमें देता है, और ईश्वर क्या है। ये सब जब क्वेश्चन हमारे माइंड में, हमारे मन में उभरते हैं, तब वो पहली बार अपने आप को जानने की कोशिश करता है। और जब अपने आप को जानना है, अर्थात अपनी इनर जर्नी शुरू करना है, ये भी एक एनलाइटमेंट की इच्छा है। और इन सभी के आंसर आपके अंदर ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके आत्मा से रिलेटेड है, पर उसके आंसर भी आप ही के अंदर है, जो आपको इनर जर्नी के द्वारा ही
अर्थात अंदर की यात्रा के द्वारा ही ज्ञात होगा। So now the desires which seek nature are categorized into 5: food, possessions, name and fame, power, and sex. So these are the 5 categories of desires which we are seeking from the nature, which we seek from the outside. So now when you are in the path of enlightenment, that means you want to know the truth. So that means there is a desire to know the truth. And when that desire to know the truth, the desire for enlightenment is there, then these desires which seek their nature, these desires of food, possession, name, and fame, they compete. They compete. So both the desires. So one, we have an internal desire to know ourselves, and the other desire is from the nature, the external desire. So when you begin the journey, the inner journey, then these external desires compete with the inner desire. Then this becomes challenging for our enlightenment journey. Once you understand what desires is blocking you, what are the traps, what are the illusions towards your inner journey, then you can come out of it. So the today's session is all about understanding what are the challenges in the path of enlightenment. सर कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि इच्छा 2 प्रकार की होती है, जो हमारी बाहर की दुनिया से हमारी जो इच्छाएं और वासनाएं होती हैं वो मुख्य 5 रूप से होती हैं। फूड से संबंधित, अपने पोजीशन, अपने संपत्ति या अपने पास रखने के संबंधित, नाम का, पावर का और सेक्स का। तो ये जो 5 डिजायर्स हैं हमारी बाहरी दुनिया से हर आत्मा में, हर ह्यूमन में होता है, यही 5 डिजायर हमारे एनलाइटमेंट के रास्ते पे भी रुकावट बन सकती हैं। बाहर की इच्छा है ये 5 और अंदर की इच्छा है एनलाइटमेंट अर्थात सत्य को जानना। तो ये दोनों अंदर की और बाहर की इच्छाएं एक दूसरे से प्रतिद्वंदी होती हैं, दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है। तो जब आप समझ लेंगे कि आपकी कौन सी बाहर की ऐसी इच्छा है जिसमें आप फंस रहे हैं आपकी अंदर की यात्रा के दौरान, तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। इल्यूजन्स जो होते हैं इससे रिलेटेड उसमें भी आप नहीं फंसेंगे। तो आज का पूरा सेशन इसी के ऊपर है कि कौन से ऐसे कठिनाइयां, चुनौतियां हैं जो हमें इस रास्ते पर बाधा या रुकावट डालती हैं। Okay, so basically the simple thing you need to understand is both the desires, they compete. Well, it all depends on which desire, the intensity is more. If your intensity of your inner desire, like the intensity of the desire to get enlightenment is more, then that takes the first step. But when that is taking the first step, then the desires from the external would like to compete your attention. So then that becomes a real challenge for a seeker of truth. So it is a quite interesting subject what we are going to discuss today. So let us go in detail, step by step. तो सर ने कहा कि जैसा कि मैंने बताया कि दोनों डिजायर एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रतिद्वंदी हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी इच्छा, आपकी तीव्रता आप में ज्यादा है। अगर आपके इनर जर्नी की इच्छा अर्थात एनलाइटमेंट की इच्छा ज्यादा है, पहला कदम आपने बढ़ा लिया, पर तुरंत तभी आपकी बाहर की जो वासनाएं हैं या इच्छाएं हैं वो आपके सामने आएंगी। तो ये आप पर है निर्भर कि आप अपनी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं या उसमें फंस जाते हैं। तो और हम इसको गहरे रूप में जानेंगे आगे। So let us go with the first one, the desire for the food. The desire for the food comes in many forms. It comes in cravings, or we have a certain addicted to a certain taste, or the taste buds, the pleasure we get for the taste buds, we eat certain foods.
or sometimes, we feel sometimes so empty inside. So to feel comfortable, we overeat the food. And some of the common things we notice is like, we know that we suppose we go for a retreat, and the very purpose of going for the retreat is for self-realization or self-healing. But after going to the self-realization retreat, you complain that, oh, there is no food or the food is insufficient. But the very purpose you have enrolled for the retreat is for the detox, is for the self-realization, for the emotional detox, for the physical detox. But knowing there, after getting into the program, then the food cravings comes in. Then you say, oh, it would have been good if they would have provided at least one meal. So this desire from the external in the form of food is complete desire to go within for the enlightenment. Okay, so that is one example, classic example. Let me give another example. Suppose somebody is practicing meditation and they become a vegetarian after 4 months of practice. And they have to attend social functions, marriages, parties. So even though they become vegetarian, even though they give up the eggs and garlic and all the things, but because when they go to the social functions, they see a favorite item, and even though they know that it has garlic, they say that, oh, it's okay, it's my favorite item. Just once in a while you eat garlic, nothing happens. Or you go to some restaurants with your family and you choose like, it's okay, fine, once a while, no problem with garlic. Or some people, they get tempted with the pastas, with the pastry, with the cakes. Even though they know that they have egg in it, they say, oh, it's okay. It's been a long time I've eaten this, so that's fine. So they give up, because that means the desire for the food takes over your desire to go deep into meditation, because you know that when you eat garlic, it impedes your intense meditation process. So knowing that, you scramble to the external desires. So what happens in this example? She couldn't meditate very intensely, and sooner or later, her desire for the food takes over and she's distracted. And instead of doing everyday meditation, she will do only once in 2-3 days a week. So her meditation journey slows down, right? This is an example. सर ने कहा कि पहला पॉइंट जो सबसे मेन है आहार का, आप लोग अपने आप को समझिए कि कई बार हमारे को बहुत तीव्र इच्छा हो जाती है कोई स्पेशल या कोई विशिष्ट भोजन करने की, हम एडिक्टेड हो जाते हैं उसके लिए। और कई बार अंदर से जब खालीपन लगता है या जरा सा भी आप ज्यादा चिंता करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तब भी आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और यहाँ तक कि हम अपने जीभ के इतने गुलाम होते हैं कि सिर्फ एक मजे के लिए ही नहीं खाते हैं। जब हम कोई स्पेशल रिट्रीट में भी पार्टिसिपेट करते हैं जहां पर ये बोला गया है कि आपको इंटेंस मेडिटेशन के द्वारा आपकी हीलिंग होगी, तब भी लोगों को मैंने खाने के लिए नाराज होते हुए देखा है कि उन्हें लगता है कि कम मिला या जो चाहते थे वैसा नहीं मिला। तो ये आहार आपके लिए मेडिटेशन में भीतर गहरे उतरने के लिए सबसे बड़ी बाधा डालता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, पर एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 4 महीने से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, नॉनवेज और लहसुन वगैरह सबको छोड़ दिए, पर 4 महीने के बाद यदि कोई सोशल गैदरिंग या फंक्शन में जाते हैं, वहां पर यदि लहसुन का बना हुआ खाना या अंडे से बने हुए पेस्ट्री और केक सर्व किए जाते हैं, तो आप अपने फेवरेट आइटम को खाने से अपने आप को नहीं रोकते हैं। आपको लगता है कि कभी कभार खाने से कुछ भी नहीं होता, ये तो मेरा फेवरेट फूड है और मैं काफी दिन से नहीं खाया हूँ, तो आप खा लेते हैं। ऐसे ही आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे अगर लहसुन का खाना मिल जाता है तो आप खा लेते हैं उसको और सोचते हैं कि 1-2 बार में कुछ नहीं होगा और बहुत टाइम हो गया है। पर आप याद रखिए कि ये छोटी छोटी इच्छा जो भोजन की है, वो धीरे धीरे आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकती है। आपको मालूम है कि लहसुन खाने से आप इंटेंस मेडिटेशन से वंचित रह सकते हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन आपका इंटेंस नहीं लगे या धीरे धीरे आपकी मेडिटेशन करने की इच्छा भी कम होते जाए। आप नियमित न करके सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार करें, और इसका मेन रीजन होगा आपका ये भोजन के प्रति आसक्त हो जाना। तो आप अवेयर हो जाइए, जो ये आपके लिए रुकावट हो सकती है अंदर की गहराई में यात्रा करने के लिए।
Okay? So you have to know the energy perspective of the food as well. When you're eating meat, fish, or seafoods, or eggs, or garlic, it impedes the cosmic energy you absorb during your meditation process. So when you understand the energy perspective, and also when you understand my desire for the food is a stumbling block for my desire to get enlightened, then it is easy to give up the desire. When you say, even for example, in this 11 days retreat, we say that eat light food and eat fruits in the night, salads in the night, eat light food so that you can do more intense meditation. So even then, some people, if they are not sincere, or if they have too much desire for the food, then would say, okay, it's an online program. Who will see what I'm eating? I'll just continue my own way of eating. So then you don't get the benefit of the program. Then your journey towards enlightenment is getting impeded. So we have to understand that the food desire plays a role, a very important role in your desire for enlightenment. Always remember, your desire for enlightenment is true. Your desire for enlightenment is real. But your desire for the external things is also competing. So you have to be aware of it. सर ने कहा कि आप लोग को मालूम है कि आहार से संबंधित कौन से हमारे दृष्टिकोण है कि कोई भी अंडा, मछली और सी फूड नहीं खाना है, न ही कोई मटन खाना है, और न एग, न गार्लिक, क्योंकि ये आप जो आप कॉस्मिक एनर्जी आप अंदर लेते हैं उसको, उसकी मात्रा को कम कर देता है, और ये खाने की जो इच्छा है वो आपकी सबसे बड़ी रुकावट है एनलाइटमेंट पे। उससे अच्छा है कि आप इस इच्छा को अपने इस अंदर की यात्रा के लिए छोड़ दें। आप लोगों को जो मैंने 11 दिन की डाइट बताई है उसको कई लोग सिंसियरली नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे कौन देख रहा है, पर आप लोग नहीं जानते कि आपको इस रिट्रीट का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा यदि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे। एनलाइटमेंट हो ही नहीं पाएगा जब तक कि आप अपनी इस ट्रू डिजायर, मतलब सत्य को जानने की ट्रू डिजायर के लिए बाहर की वासना को, बाहर की इच्छा को जब तक नहीं छोड़ देते। So exercising self-control is very important if you want to overcome this desire. This is one of, I call it as 5 traps. Call it as a 5 traps. Traps for, see, these desires are not bad, but when you have the desire for enlightenment, then this becomes a traps. So the number 1 trap is the food. And again, I repeat, the desire for food is nothing wrong in it. For a baby soul, for an infant soul, for an adult soul, there is nothing wrong in it. But when your desire is for the truth, then it becomes an obstacle. So you have to be aware of it. So exercising self-control, that means fasting. 1 day of fasting. That means you take only liquids, you take only juices, no solid food 1 day. It gives you a discipline. Fasting gives you a discipline. Practicing mauna gives you a discipline. And don't meditate with having full stomach. First of all, you should never eat full stomach. Any point of time, you should always eat 3/4 of the stomach, not full. Half stomach is ideal. But 3/4, if the food is so tasty, 3/4. But don't eat full stomach. It is not good for the health. And if you eat full stomach, you wait 1 or 2 hours. At least 1 hour before you sit for meditation. If you eat full stomach and then meditate, then you cannot meditate deeply. Then sooner or later you will be disappointed with your meditation. So you have to be aware of all those things, my dear friends. सर ने कहा जो मैंने 5 रुकावटें बताई हैं, ये समझ लीजिए 5 जाल हैं आपके लिए जो आपकी बाधा डाल सकती हैं। ये 5 जो चीजें हैं, और उसमें से जो मैं आहार पे ये बता रहा हूँ, वो बेबी, इन्फेंट सोल वगैरह के लिए बिल्कुल ठीक है, वो कितनी भी मात्रा में खा के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पर यदि सत्य के प्रति आपकी यात्रा शुरू हो गई है तो ये फूड आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आपको सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, स्वयं नियंत्रण रहना चाहिए। आप कम खाएंगे और 1 दिन हफ्ते में सिर्फ लिक्विड पे, जूसेस वगैरह पे ही आप रहें। इससे आपकी बॉडी आपके अनुशासन में रहेगी। बिल्कुल वैसे ही मौन के द्वारा भी हम अनुशासन में रहते हैं,
और जब भी भोजन करें तो पूरा परभेद भोजन न करें, सिर्फ 3/4 भाग ही आप खाना खाएं, 1/4 भाग आपके हवा और उसके लिए खाली रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप 3/4 भी खाना खा रहे हैं तब भी आपको मेडिटेशन 1 घंटे के बाद बैठना चाहिए, ताकि आपका पाचन थोड़ा हो जाए और आप गहराई में जा सके ध्यान के। और यदि आपने परभेद भोजन कर लिया तो आप निश्चित ही उस दिन निराश होंगे अपने मेडिटेशन से, क्योंकि अंदर की यात्रा असंभव हो जाएगी। Now let's go for the desire for possessions. This is the second one. Now, the desire for possessions, I mean, you feel attracted. Possessions means materialistic things, like handbags, watches, okay, dresses, slippers, shoes, wardrobes, new furniture, houses, electronic gadgets, anything you possess. There is a desire to possess certain thing. So that desire also is one of the traps in the path of meditation. And there is nothing wrong in having what you need, but when it goes beyond what you need, you are possessing things which goes beyond your need, then it becomes a trap. I'll tell you an example. Well, let's say a person has been practicing meditation, and then he is an IT guy and he got interest in the gadgets, and he's always checking online, Amazon, Flipkart, and to find the new mobiles and new gadgets. And so most of the time he's occupied with this. His passion is towards electronics. So most of the time he's passionate towards that, and he's finding what are the latest things available. So what is happening is, instead of the time he can dedicate to read the books or to practice the group meditation, or to have a satsang or to meditate, he's spending most of the time on the mobiles, on the electronic gadgets, and that is also a distraction. So that is a distraction for his enlightenment process. So it's just an example, but you can take this example for anything, not only for electronics, for clothing, for shelter. Some people, they have desire to possess too many houses. They are not satisfied with one. They want a holiday home. They want one more house in another city. So needing more than desiring more than what you need. See, in the path of spirituality, you have to be very aware what you need, what you want. Needs are essential. What you need is food, clothing, shelter. That is a need. So the desire for the need is nothing wrong. But you desire for more than what you need, then that becomes an obstacle in your spiritual journey, my dear friends. तो सर ने कहा है कि दूसरा है डिजायर फॉर पोजेशंस, हम जिसको कहते हैं परिग्रह। कोई भी चीज, बाहर की दुनिया की कोई भी वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का जब हम संग्रह करते हैं, उसके लिए आसक्त होते जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बाधा पहुंच जाता है। जैसे कई लोगों को बहुत कपड़े का शौक होता है, कई लोगों को मकानों का, कि बहुत सारे मकान हो हमारे पास, संपत्ति हो, बैंक बैलेंस हो, कई लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, हर एक के अलग अलग इच्छाएं होती है, उसका परिग्रह उन लोग ज्यादा करते रहते हैं। पोजेशंस आपके जरूरतों की पूरा करने के लिए बिल्कुल वाजिब है, परंतु अपने आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह आपके लिए बाधा बनता है। जैसे एक एग्जांपल लेके सर ने बताया था कि पीटर नाम का, सर दूसरा स्लाइड पर, हाँ, पीटर नाम का जो एक बच्चा है, वो काफी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्टेड रहता है। वो कर रहा है मेडिटेशन 15 महीने से, परंतु उसकी इच्छा जो अधिक से अधिक मोबाइल लेने की, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऑनलाइन मंगा के उसको यूज करने की रहती है। तो इसके कारण वो होता है कि अपने मेडिटेशन में वो उतना समय नहीं दे पाता, अपने इस जुनून के कारण। न सज्जन संगति कर सकता है, न ही कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकता है। उसका अधिक से अधिक टाइम अपने इस गैजेट्स के साथ ही जा रहा है। तो बताइए, सिर्फ एक इच्छा उसके एनलाइटमेंट के रास्ते पर कितनी बड़ी रुकावट बन जाती है। ये तो मैं एक एग्जांपल दिया हूँ पीटर का, परंतु लोगों के भी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे अधिक से अधिक मकान रखने की हो। याद रखना कि आपकी सिर्फ 3 ही जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। वो आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, पर आवश्यकताओं से ज्यादा कोई भी चीज का संग्रह या
डिमांड मतलब मांग आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो परिग्रह ना करें। और So when this desire for possessions increases, then it becomes greed. So greed simply means you want more than what you need. When you want more than what you need, that becomes a greed. And this greed is the chief source, is the main source of all the sorrows, of all the miseries of life. Now, the only way to come out of the greed happens because of lack of meditation. Because when there is no meditation, there is no awareness. So naturally, the greed comes in. But the more and more you do regular meditation, you come out of the greed. And every day, before you go to bed, you should always remind yourself that in my life, am I having anything more than what I need? Anything more than what you need is going to be a stumbling block in your journey. So share it with others. Anything more than what you need, always you share it to others. That helps in good karma, and that also helps you to let go of the greed. So when you let go of the greed, that helps you to focus your time, your energy into the self-realization process, into the inner journey. सर कहते हैं कि इसका मेन कारण ग्रीड है। ग्रीड अर्थात लालच। ये लालच इंसान में तभी होता है जब उसके पास मेडिटेशन का अभाव होता है। यदि कोई भी व्यक्ति रेगुलर नियमित रूप से मेडिटेशन करता जाएगा तो उसका लालच कम होते जाएगा और वो अपनी जरूरत और वासना मतलब अधिक संग्रह करने के बीच में भेद कर पाएगा। आपको रोज अपने आप को याद दिलाना है कि मेरी जिंदगी में जो भी जरूरत है वो मैं रखूंगा और इससे ज्यादा जो भी है आप उसको बांट दीजिए। आप अपने जरूरत के प्रति आपकी आवश्यकताओं के लिए आप जरूर प्रेरित रहिए, पर अपने लालच के प्रति आप अवेयर हो जाइए। और ये सेल्फ And the motivation of your life, any work you do, any job you do, any project you do, anything you do, the motivation should be based on your needs and not by your greed. So that when your motivation is based on the needs, then you will focus all the time and attention and energy towards your inner journey. But when you are motivated towards the greed, then you are going far away from the enlightenment process, because this desire is competing with your enlightenment desire. तो सर ने कहा कि अपने जीवन में हमेशा मोटिवेट होते रहिए, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, कोई भी आप आजीविका के द्वारा कमा रहे हो, तो आपका मोटिवेशन, आपका प्रेरणा स्रोत सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना हो। इससे क्या होगा कि आप अपने अंदर की यात्रा के लिए ज्यादा अपनी एनर्जी सेव करके रखेंगे। और यदि आप लालच करते जाएंगे तो क्योंकि लालच आपके इस एनलाइटमेंट रास्ते पर विपरीत मतलब प्रतिद्वंदी है, तो आपको सिर्फ अपना मोटिवेशन अपनी जरूरतों पे रहना चाहिए, लालच पे नहीं, अधिक मात्रा में रखने पे नहीं। And also you have to remember the most important point, what Buddha has discovered. The greed is the reason for sorrow. Trishna, greed means Trishna. Trishna is the reason for suffering. So you have to remember that. और बहुत मुख्य बात यह है कि आप बुद्धा के उस स्टेटमेंट को याद रखिए कि तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा अर्थात हमारी इच्छाएं और जो लालच है वो हमारे दुख का कारण है, उसको हमेशा याद रखिए। Coming to the third one, the desire for fame, name. So this desire is linked to a personality, or in other words, it's your false I, or in other words, it's your ego. Ego is nothing but your feeling of your own identities. You feel you are something and you get attached to that feeling. That becomes your ego. That's your false I. So this desire for name and fame is linked to your ego.
is linked to your personality. So for example, we have many masks. We wear many faces. Like, we wear the mask of a father, a son, an employer, a businessman, a social service person, a teacher. We wear many masks. And these are all false identities. It's not our real I. It's not our true I. We're just playing a role. But when you get attached to that role, then you have certain priorities. Oh, I like this role. I like this personality. So then your desire to get acknowledged, or your desire to feel superior, your desire to feel special comes in. Then you are stuck in that false identity. Then you are stuck in the ego. Yes, madam. सर ने कहा कि एक और ऑब्स्टिकल है हमारी इच्छा का कि ईगो हमारे को हमको नाम प्रसिद्धि चाहिए रहता है। और ये नाम प्रसिद्धि क्यों हमको चाहिए? क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। ये जो हमारा व्यक्तित्व से जुड़ाव है वही हमारा अहंकार है, वही हमारा झूठा मैं है। जैसे कि आप बहुत सारे रोल्स करते हैं, हर इंसान, किसी का बेटा है, पिता है, टीचर है, सोशल वर्कर है, या कोई भी आपकी कोई भूमिका है इस समाज में या घर में, परिवार में, वो सभी आपके अलग अलग मास्क है, अलग अलग रोल है। पर ये आपकी व्यक्तित्व की पहचान नहीं है, ये सिर्फ आप एक भूमिका निभा रहे हैं। पर होता क्या है कि हम इस भूमिकाओं से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और आप अपनी इस रोल को पसंद और सुपीरियर करने के लिए, लोगों के सामने अपने को बड़ा चढ़ा के बताने के लिए सबसे ज्यादा इस पे जोर डालते हैं। और यही आपके जो अहंकार है, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ा के रखना, वही आपके लिए सबसे बड़ी बाधा पहुंचाता है। So there are many aspects of personalities, like, professional, social roles, accomplishments, talents, how you look. All those are personalities. It's your false I. It's not your real you. So these ego characteristics comes in the way of your enlightenment. Just say example, there was a lady who was doing meditation regularly for 1 year, and she was very sincere because she has the desire to get enlightened. She has a desire to know the truth. So she starts joining Gyan Bharat and she starts meditating every day. And after 1 year, she got a lot of benefits from the meditation. But after 1 year, her husband is not a meditator. Her husband says, "You are doing too much meditation. You are not devoting much time to me like before. So what are you doing? Are you fulfilling the role of your wife?" So then she says, "Oh, okay, so I'm also a wife, so I should fulfill the role of a wife." So what she does, so she leaves the group meditation, and she will join only whenever she has free time. And the rest of the time she's cooking food for the husband and children. So she goes back into the previous role as a wife. So she is distracted by her desire for her name, like, I'm a wife. Remember, this wife is again an identity, a role, a mask. She's playing that role. So that comes into as an obstacle in her journey. So she's distracted because she has the desire to be a good wife. It's like, in the society, or she wants the husband to acknowledge her as a good wife. So that becomes a distraction. तो सर कह रहे हैं कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत से पहलू होते हैं हमारे व्यक्तित्व के। जैसे हमारा कोई प्रोफेशनल एक चेहरा होता है, हमारा सोशल का भी एक चेहरा होता है, और हमारे पास बहुत सारे टैलेंट अच्छे हमारे लुक्स पे, मतलब हमारे बाहरी फेस वगैरह, मतलब अपने को दिखाने के लिए, इन सब के अलग अलग पहलुओं पे हम अपने अहंकार को बढ़ाते हैं।
हम इससे अटैच हो जाते हैं और उसी के अनुसार हम काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जेन के बारे में बताया कि वो 1 साल से किसी ग्रुप को ज्वाइन करके वो 1 साल से मेडिटेशन कर रही थी, उसको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा था। पर 1 वर्ष के बाद उसके हस्बैंड जो मेडिटेटर नहीं थे उसको कहते हैं कि तुम बहुत मेडिटेशन कर रही हो, तुम अपनी मैरिड लाइफ पे और अपने आप पे ध्यान नहीं रख रही हो। तो उसे लगता है कि शायद वो अपनी आइडेंटिटी खो रही है, अपनी पहचान खो रही है। तो वो जो पुरानी गृहिणी के रूप में वो अपने सिर्फ परिवार की देखभाल करती थी, अपने शरीर की देखभाल करती थी, फिर वैसे ही वो ध्यान रखने लग जाती है, वो ग्रुप को भी छोड़ देती है और कभी कभी जब उसको फ्री टाइम मिलता है तब मेडिटेशन करती है। तो देखिए, जो एक अच्छे से अपने पाथ पर, अपने राह पर चल रहा है, पर सिर्फ अपने पति के कहने पर या किसी और के भी कहने पर वो अपने यात्रा से भटक जाता है और अपने वो जो चेहरे हम लगा के रखे हैं अलग अलग, जो हमने बताया पर्सनालिटी का, सोशल का, अपने फैमिली का जो चेहरा होता है, हम फिर से उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जेन भी वैसे ही एक डिजायर रखी हुई थी कि मैं एक अच्छी पत्नी बनूं, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करें, मुझे एक्नॉलेज करें। उसके कारण उसने मेडिटेशन को भी प्रायोरिटी से नीचे कर दिया, सिर्फ अपनी उस ईगो मतलब झूठे मैं को साबित करने के लिए। Let's go for another example. A person who was doing 2 years intense meditation, and because he was focused to get enlightened, so he was doing intense meditation, and he got a promotion in a job, and he got into a senior role, a managerial role. And so because of that, he wants to prove that he was a very good employee. And so what he does is, in the process, he lets go. He cannot attend the group meditations anymore. So what he says, okay, now my job has come to me as a priority, and so I cannot attend this group meditations every day, but I will attend only on the weekends because I have time only on the weekends. So he got distracted with his identity, with his desire to have promotions in your work and to have this designations. And he gives excuses to himself that, I cannot attend everyday meditation. But he may not be able to attend, but he can do everyday meditation. Where there is a will, there is a way. But his desire for this name and fame to be a good employee becomes distracted. That comes as a distraction towards his enlightenment journey. एक और एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि एक सैम नाम का व्यक्ति है जो बहुत ही सिंसियर था मेडिटेशन से, और वो 2 साल से मेडिटेशन कर रहा था रेगुलरली और ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखा था, परंतु उसको अपने काम में प्रमोशन मिल जाता है और उसको लगता है कि मैं और इससे जो उसको नई भूमिका मिली है प्रमोशन के द्वारा, उससे और ज्यादा मैं अचीव करूं। तो जो वो अचीवमेंट मिला था उसमें वो इतना आसक्त हो गया कि जो वो रोज मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन और अपने ऊपर टाइम देता था, वो उसने कटौती कर दी और अपना पूरा ध्यान अपने जॉब के प्रमोशन और उसके कामों में लगा दिया। सिर्फ वीकेंड में ही वो मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन करके मेडिटेशन करता था। तो सर कह रहे हैं कि प्रमोशन और आजीविका कमाना कोई गलत नहीं है, पर प्रमोशन और डेजिग्नेशन पद के लिए आप जब अपने आप को भूल जाते हैं, अपने यात्रा को स्लो कर देते हैं, तो वो आपके लिए बाधा बनाता है। वो अगर मान लो रोज नहीं भी मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, मान लीजिए ग्रुप मेडिटेशन के लिए रोज नहीं भी आ सकता तो ठीक है, पर कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो उसको रोज मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे उसका प्रमोशन, उसका काम कितना भी हो। तो ऐसे ही हम एक झूठे मैं और अपने इच्छा, अपने जो नाम, पद प्रतिष्ठा, हमारी पद प्रतिष्ठा के लिए कई लोग इस रास्ते को स्लो कर देते हैं या छोड़ देते हैं। So you have to understand these identities, what we have taken, these masks, what we have put. See, we all take social roles and responsibilities, but that is nothing but an empty bubble. That is not us. That is not the real identity. It is nothing but an empty bubble. So fundamentally, you have to understand that ego is rooted in ignorance. The more you are in ignorance, the more you are into ego. Ego is not something bad. But when you are ignorant about your true self, then you are stuck in your ego. But every day, every moment, you realize that I am an Atma. Yes, I play many roles, but I am a soul. And my journey on the planet Earth, I have come to the planet Earth for self-realization, to know the ultimate truth of who am I. So when you have that awareness,
then you are no more in ignorance. Then you are no more stuck with name, fame. तो सर कहते हैं ये जो झूठा मैं है वो कुछ भी नहीं, एक बुलबुला है, पानी का खाली बुलबुला ही है। और ये जो अहंकार है उसकी जड़ हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता है इसलिए कह रहे हैं सर क्योंकि हम अपने आप के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। मेरी जर्नी जो पृथ्वी पर हो रही है वो सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानने के लिए है। और जो अंतिम सत्य है कि मैं कौन हूँ, मुझे वही जानना है। जब आप इस सत्य को और इस ज्ञान को अपनाएंगे तो कभी भी इस नेम फेम और झूठे अहंकार के इसमें नहीं फंसेंगे। Now this can come in many forms. Sometimes people who are in the spiritual path, who have dedicated their life in this for the spiritual path, then they consider themselves to be spiritual teachers. They consider themselves to be, because they're wearing the mask of a spiritual teacher, and sometimes they get distracted with this name and fame. They make the flyers that with a lot of makeup and with a lot of special clothing, and they want to appear so nice and so good. They want to appear charming. And when they do the programs, they want to make sure it is reaching out to thousands and thousands of people. So they always check for how many views are there, how many likes are there, how many comments are there. So they get stuck in this cycle of desire for name and fame, forgetting that the very purpose is to know the self, but not to get identified as an organizer of spiritual programs or as a teacher. You should always be aware of the masks you are wearing. So then you are out of ignorance. Then you are no more in the empty bubble. सर कह रहे हैं कि बहुत तरीके होते हैं इस नाम के ट्रैक में फंस जाने के लिए। मान लीजिए कोई अपनी इस एनलाइटमेंट की यात्रा पे बहुत ज्यादा समर्पित है, तो बहुत ज्यादा समर्पित होने के कारण वो एक स्पिरिचुअल टीचर भी बन जाएगा, पर उसके बावजूद इस नेम और फेम से भी वो डिस्ट्रैक्टेड, बाधित हो जाता है, भटक जाता है अपने रास्ते को। वो अपने आप को बहुत स्पेशल बताने के लिए करेगा और बहुत अच्छे कपड़े और बहुत चार्मिंग तरीके से वो लोगों के सामने आएगा। उसका पूरा ध्यान लोगों को अट्रैक्ट करने पे रहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा कि मैं कितने हजारों तक के लोगों तक के पहुंच पा रहा हूँ और कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, या वो भी नेम और फेम के साइकिल में ही फंस जाता है। जबकि पर्पस क्या है? अपने आप को जानना। तो एक ऑर्गेनाइजर, एक स्पिरिचुअल टीचर की मास्क में, मतलब उस चेहरे के पीछे भी आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं। और यदि तब भी आप फंस रहे हैं तब आप समझ लीजिए कि आप एक खाली बुलबुले ही रह जाएंगे ट्रू टीचर में। कितने व्यूज है? Now let's go to the next one, the fourth one, the desire for power. So when it comes to the power, then it's always the desire for control, or feeling special through spiritual gifts, having the siddhis. This is again a big trap, a very big trap, and illusions. So this is another area where it becomes, the desire for power actually comes as a direct competitor for the desire for enlightenment. Now, the classic example is Ravana. Ravana was a king. He was a great meditator. He's a learned scholar, and he's a devotee of Shiva. He had a lot of spiritual gifts, and but he had the desire for power and control. He had the desire that all the Panchabhutas should be under his control, and he should be the greatest. And whatever he desired, he should get it. Everybody should listen to him. So because of this power, even though he is a meditator, even though he is a sincere meditator, a great meditator, but this desire for power has come in direct competition with his desire for enlightenment.
and then in the end he has to be killed by Rama because he has become an obstacle for many others' enlightenment process. So he has become a Rakshasa, he has become a demon, he has become a real demon. Now this is how the desire for power is. This is a classic example. ने कहा कि एक और ऑब्स्टिकल है पावर, मतलब शक्ति। कई लोगों की बहुत इच्छा होती है दूसरों पे नियंत्रण करने की, वो इस भ्रम में फंस जाते हैं। उनको कुछ लोगों को गिफ्ट्स भी मिलती हैं, सिद्धि जिनको हम कहते हैं वो मिल जाता है, और कई लोग इल्यूजन में फंस जाते हैं और ये शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो जो ये शक्ति है वो आपके प्रतियोगिता करता है, आपके अंदर की जो जर्नी की जो इच्छा है, डिजायर ऑफ एनलाइटमेंट है, उस पे प्रतियोगिता के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने रावण के लिए कहा कि वो लंका का राजा था और भगवान शिव का भक्त था, बहुत बड़ा विद्वान था, उसके पास बहुत सारे इस आध्यात्मिक शक्तियां थी। उसके बावजूद उसकी जो इच्छा थी शक्ति और दूसरों पे कंट्रोल करने की, कि मैं सब पे पंचभूत पे मेरा कंट्रोल रहे और सभी लोग उसको माने, तो ये जो उसकी जो बुरी इच्छा थी पावर की, वो उसी के कारण वो राक्षस के रूप में आज भी याद किया जाता है, जबकि वो एक महान ज्ञानी था और विद्वान भी था। सिर्फ एक डिजायर, एक इच्छा कि मेरी शक्ति सबसे ऊंची रहे, वो उसको ले डूबी। Let's take another example, and this is a real example which one of our meditators in the initial days many years ago. So I don't want to. It's a pseudonym. It's not the real name. But this is a real example where they were doing a regular meditation, intense meditation, and suddenly he got a third eye activated and astral travel started happening. Started channeling the astral masters, and he got the great gifts of telling the future of other people by holding the hands. So with that gift, what happens? He stopped practicing in groups because he starts feeling that he has become enlightened already. So I cannot be a simple student anymore. I have to take the role of a teacher. So what he did is he started doing his own individual sessions. He started having his own groups, and he started doing his own channeling sessions and messages. He started channeling messages of other masters and other people. Then he starts feeling to be very powerful, and he felt like he's the chosen one by the star beings, by the galactic command, and he has been chosen to help the humanity, and he starts feeling very special. And what happened was he got sidetracked with his spiritual gifts because he couldn't understand that the spiritual gift is nothing but an illusion of enlightenment. And he got distracted, for his desire for enlightenment got distracted with the gifts he received in the process of meditation. तो सर कह रहे हैं कि और एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक फॉल्स नाम लिया है, पर ये सच की कहानी है, हमारे ही कोई मास्टर की कहानी है, पर मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। उसका नाम मैंने राज रखा है कि वो 8 साल से बहुत इंटेंस मेडिटेशन कर रहा था और उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई थी और वो काफी एस्ट्रल ट्रैवल भी करने लग गया था। बाद में उसको चैनलिंग मैसेज भी एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा मिलने लग गए। तो जो ये सिद्धि मिल गई थी उसके कारण वो सिर्फ लोगों का हाथ पकड़कर भी उन लोगों के फ्यूचर को बता सकता था और भी कई चीजों को वो भविष्यवाणी वगैरह कर सकता था। इस पावर के कारण, इस सिद्धि के कारण उसने खुद का नियमित रूप से जो मेडिटेशन होता है उसको छोड़ दिया। उसने ग्रुप मेडिटेशन के सेशंस भी अटेंड करने बंद कर दिए। सिर्फ वो अपने इंडिविजुअल और ग्रुप सेशंस लेता था जिसमें वो सिर्फ चैनलिंग मैसेज लोगों को देकर अपने को स्पेशल फील कराता था। तो उसके खुद के जो सिद्धियां मिली थी वही उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बना। और जो हाँ, उसे लगता था कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ और मैं इस मानवता के सेवा के लिए चुना गया हूँ, स्पेशल मुझे चुना गया है।
तो वो अपने को विशिष्ट समझने लग गया, और यही सिद्धियां, यही भ्रम उसको ले डूबे, और अपने जो ये डिजायर थी उसकी पावर की, वो उसको एनलाइटमेंट के रास्ते पर न ले जाकर बल्कि भ्रम के रास्ते पर ले गई। So before we go to the next one, I think this is very important to understand that when you are in the process of, when you make an attempt to know the truth, and when you start meditating, you will receive, everybody will receive a lot of gifts. But you should be very aware of these gifts, what we call it as power, because that comes to test whether you are sincere in your journey or not. That is a desire to feel very powerful, to help the whole humanity, to be a savior. These are all the real desires. But it is not a real help you are doing the humanity. There is a mask. You being a savior, and you want to help the humanity, and you want to help as many people as possible come into meditation through your channeling sessions and all those things. It is nothing but a trap. It is a spiritual trap to make you feel special and powerful, because deep down you feel very inferior. Deep down you feel very empty. And by projecting this power, you feel you are special. And this feeling special and this power is like, the example of Ravana is a direct competitor. Underline the word, is a direct competitor for the desire of enlightenment. So one has to be very aware. If you are having some siddhis in your meditation process, you're able to channel, you're able to speak light language, or you are able to open your third eye and see certain things, you can do astral travel, that's fine. But be aware that those gifts are nothing but your spiritual traps. Your focus should be only on the desire for enlightenment. So you should be very aware of this. सर कहते हैं कि सिद्धियां हमको इसलिए दी जाती हैं, जो आध्यात्मिक गिफ्ट्स हमको दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारा टेस्ट किया जाए। अक्सर इसको यूज न करके लोग अपने आप को चूजन वन, मतलब एक चुने हुए या स्पेशल या सेवियर, मतलब रक्षक के रूप में, अपने आप को मसीहा के रूप में समझने लग जाते हैं। ये भी एक तरह की इच्छा ही है, और चैनलिंग सेशंस के द्वारा लोगों को भटकाते हैं, खुद तो भटके ही हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं। जो भी ऐसे सब चीजें को समझते हैं, जैसे अपने को स्पेशल, सेवियर और चैनलिंग मैसेज के द्वारा लोगों का भला करना, ये सब जो भी करते हैं वो अंदर से बहुत ही खाली होते हैं। उनको बहुत इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको ओवरकम करने के लिए वो बाहर की दुनिया में अपने को विशिष्ट दिखाते हैं। तो सिद्धि पाना, जो सिद्धि होती है, वो आपका डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष प्रतियोगी होता है आपके एनलाइटमेंट के मार्ग पर। जो भी थर्ड आई विजन जिनको होता है, या एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, या लाइट लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छी जरूर है, परंतु इस स्पिरिचुअल ट्रैप के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। आपका उद्देश्य इन सब चीजों के लिए नहीं है, आपका उद्देश्य सिर्फ अपने एनलाइटमेंट के ऊपर ही रहना चाहिए। Okay. And the final obstacle, the fifth one, is a desire for sex, opposite sex. So you have to understand that the soul is neither a male nor a female. The soul is androgynous. It's neither a male nor a female. But your desire to unite with your opposite sex comes because you have suppressed those qualities within you. So when you have suppressed those feminine qualities within you, you have the desire to have a sex with the female. If you suppress the masculine qualities, then the desire to have the sex with a male partner. So this desire fundamentally comes because there is something suppressed within you. And a man and a woman who have not experienced their soul essence, they feel very incomplete. So because they feel so incomplete, they have this desire, they have this compelling desire to merge with the opposite sex. And when this desire becomes uncontrolled, then it becomes lust.
सर पहले वाला स्लाइड कर दीजिए। सर कह रहे हैं कि आत्मा न मेल होती है न फीमेल होती है, वो एंड्रोजेनस अर्थात उभयलिंगी होती है, और जो दूसरे विपरीत लिंग की तरफ जो हमारा आकर्षण होता है वो हमारे इच्छा होती है, उसको हम जो दबा लेते हैं, जो भी दबाया जाता है इच्छा को, वो विपरीत लिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। अगर आप मस्कुलिन एनर्जी को सप्रेस करके रखे हैं तो आपको मेल से, या आपने फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस करके रखे हैं तो वो फीमेल के प्रति अट्रैक्टेड होगा। और जो व्यक्ति अपने आत्मा की एसेंस को अर्थात अपने आत्मा के सार को नहीं फील करता है, वो अपने आप को अपूर्ण समझता है, फील करता है, और इसके लिए वो दूसरे लिंग के साथ यौन संबंध बनाना चाहता है ताकि वो पूर्ण महसूस कर सके। तो ये जो असंयमित इच्छा होती है सेक्स की, उसे ही हम लस्ट कहते हैं। Now, so you have to understand that to get attracted to an opposite sex, there is nothing wrong about it. But you are feeling incomplete deep down. There is a compelling urge to have many, many partners. Then there is something wrong within you. You need to look into that. Then that is also a trap. So to have a healthy union, when you feel complete and you want to share your completeness, that is a healthy sex. But when you're feeling incomplete and you want to feel the incompleteness through getting attracted to with an opposite sex, that is something not right. So you have to be aware of what is happening within you, because this is a major obstacle in the path of spirituality, in the path of enlightenment. Okay, so let me tell you an example here. So a person is practicing meditation for 10 years, he is happily married, and he has 2 children, and his whole family meditates. All is good. But this desire for sex comes in the most unexpected ways, or because this desire is like a seed, and this seed will sprout in the ways which you cannot even imagine. For example, this fellow who is already a happily married person and is a meditator for 10 years, but deep down he feels incomplete, right? Deep down he is not complete because he never felt his own soul essence. He is meditating. It's okay, but he is not sincere in his meditation. He is not sincere towards the enlightenment process. He is just doing meditation. So he never felt his soul essence. When he never felt his soul essence, because to get enlightened is not the priority number one. He didn't do Sajjana Sangatya, he was not doing Swadhyaya. His intensity towards enlightenment was not so deep. So he was superficially meditating. And then one day he hears that, okay, but he has this savior attitude. He wants to help the people. Now he has become a 10 years meditator. Now he's become a senior meditator. So he hear that, okay, somebody is getting a new beginner of meditation. He's going through some issues, some emotional issues or some energy issues. So he hear that, okay, if you have sex with that person, then you are helping that person by giving the energy transfer. So that idea, that crooked idea got sprouted in his head and saying, okay, actually I'm helping another person. So he starts having sex with many, many people in the name of savior or in the name of helping or energy transfer and all those nonsense. So that has actually become an obstacle for his own enlightenment journey. सर ने कहा कि कई लोग जो अपने को अंदर से अपूर्ण मानते हैं, उनको बहुत सारे दूसरों के साथ संबंध बनाने की इच्छा जागृत होती है। ये बहुत बड़ी आपका प्रतियोगी है आपके इस रास्ते पर। हेल्दी सेक्स अर्थात अपने जीवन में अगर आप संयमित रूप से अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि आप अपूर्ण हैं तो आप अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड होंगे ही। ये बहुत अलग अलग तरीके से होता है। ये एक बीज के रूप में है जो आपके में रहता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कब एक अंकुरित हो जाएगा।
जब भी आप समझ जाइए कि डीप डाउन जब अपने को अपूर्ण समझता है वो ही सेक्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। उन्होंने कहा है कि एक मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि एंडी 10 साल से मेडिटेशन कर रहा था और वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है, उसकी पूरी फैमिली मेडिटेशन करती है। वो अपने रास्ते पर जा रहा है, अपने एनलाइटमेंट के रास्ते पर मेडिटेशन उसकी पहली प्रायोरिटी नहीं है। वो सतही तौर पे मेडिटेशन जरूर कर रहा है पर डीप डाउन वो उतना डेडिकेटेड नहीं है अपने इस राह के लिए, इस रास्ते के लिए। और उसके में एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो अपने आप को मसीहा समझता है, सेवियर समझता है, और इस सेवियर एटीट्यूड के कारण ही उसको एक बार सुनने में आता है कि यदि वो किसी के साथ सेक्स करेगा तो वो अपनी एनर्जी दूसरे को दे देगा और ताकि दूसरे लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकेंगे। और फिर वो अपने आप को मसीहा समझ के कि मेरे पास बहुत एनर्जी है और मैं दूसरों को एनर्जी दूं, अपने को ही भ्रम में रखा। और जो बीज के रूप में उसके मन में ये सीड था वो आखिर अंकुरित होने लग गया और वो लोगों को ऑफर करने लग गया कि उसके साथ यौन संबंध बनाए ताकि वो उसकी एनर्जी का फायदा उठा सके। तो उसने जितने बार भी यौन संबंध किया तो उसने अपने लिए ही दूसरों को एनर्जी दिया या नहीं दिया ये कोई मैटर नहीं है, पर उसने अपने एनलाइटमेंट की राह पे सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर दी। Over a period of time, his thoughts becomes changes into lust, and he is no longer authentic. He is no longer honest and truthful to his marriage. So when the authenticity is no more there, then he is not eligible to get enlightened. So he got distracted in his enlightenment path by his own desire for sex. तो सिर्फ एक विचार कि मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ इस यौन संबंध के द्वारा, सिर्फ एक विचार उसके में लस्ट पैदा कर देता है और अब वो अपने लिए ईमानदार नहीं है, ना ही अपने लिए सच्चा है और न ही अपने पार्टनर के साथ भी वो कोई सच्चा काम कर रहा है। तो देखिए जो एक सही राह पे चल रहा था, हो सकता है कि वो एनलाइटेंड होता, पर सिर्फ वो अपने राह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया इस डिजायर ऑफ सेक्स का के कारण। So we have to understand, friends, fundamentally the soul has no gender. And we have to experience our essence of our own soul through meditation. Only through meditation it is possible to experience sincere, regular meditation, which helps you to feel your own essence. So when you feel your own soul essence, then you realize that it is beyond masculine and feminine, it is beyond the body. So when you are complete in that, when you're so fulfilled, then you will be involved in a happy sexual exchange. But when that incompleteness is there, then your energies tend to project outwards. You get easily attracted to opposite sex. In the path of this meditation journey, you will get easily attracted to the opposite sex. So whenever you get attracted to an opposite sex, you should tell yourself, I'm getting attracted to an opposite sex because I feel incomplete within. So by going outside and having sex with multiple people is not going to solve my problem. But by going more deeper in meditation, there is a possibility I can feel myself, and there is a possibility the desire will evaporate. So that is the right attitude. तो सर कह रहे हैं कि आत्मा का कोई भी जेंडर नहीं होता है। हम अपने मेडिटेशन के दौरान अपने सोल के एसेंस, उसके सार को हम फील करते हैं और बैलेंस रखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यदि आपको किसी दूसरे ऑपोजिट जेंडर के प्रति आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो आप अपने अंदर में झांकिए कि कहीं आप अपने आप को अपूर्ण तो महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अंदर में अपूर्ण महसूस करते हैं तभी हम बाहर से उसको पूर्ति करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यौन संबंध बनाना चाहते हैं, जबकि वो उसका सही समाधान नहीं है। इसका समाधान सिर्फ यही है कि आप अपने मेडिटेशन में और गहरे उतरिए। जितने गहरे उतरते जाएंगे तो संभव है कि आपकी जो ये दूसरे के साथ यौन संबंध की इच्छा है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाए और आप अपने सोल एसेंस को फील कर पाए। Okay. So you see in all those examples which I gave,
So they got distracted by the desires which are seeking the nature, because the external desires, they compete with the internal desire, which is the desire to know the truth. So they got distracted. So these are the 5 distractions one has to be aware in the process of enlightenment. So always remember your true desire. We might have many, many desires. External desires are many, many. But our true desire, the core desire of the Atma, is to get enlightenment. That is the ultimate desire. And the truth seekers, they don't miss the opportunity to practice meditation, individual meditation, group meditation, and they read regular spiritual books, and they join the satsangs, and they are very sincere. So the sincerity and seriousness, these two are the necessary ingredients. If you add these necessary ingredients in your practice of meditation, where you are sincere and serious, you are sincere towards knowing the truth. You are sincere towards knowing who am I, what is life, what is death, what happens after death, what is this very purpose of life. So that ultimate core, if you have that sincerity, I want to know only this, I won't be getting distracted by anything else. Yes, you might get distracted, but if you become aware that, yes, I have a desire for money, I have a desire for fame, I have a desire for sex, I have a desire for power, those desires are there, but my desire to the truth is much more deeper, much more greater, much more intense. The moment you become aware of it, then you divert your energies towards the desire of self-realization. And that is the path of the truth seeker. तो सर कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने 5 आपको लोगों को ट्रैप बताया है कि किस तरीके से इच्छाएं हमारी जागृत होकर हमको एनलाइटमेंट के रास्ते पर भटकाती हैं। ऐसे बहुत सारे डिजायर हैं जिनको मैं नहीं बोल रहा हूं, पर बहुत सारी होती हैं डिजायर, पर हमारी एक ही मुख्य डिजायर, कोर डिजायर होती है ताकि हम एनलाइटन हो सके। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, ये सब जानना ही हमारी कोर डिजायर है, मतलब मेन मुख्य इच्छा होनी चाहिए। और जो भी मैंने आप लोगों को बताया है उसके प्रति कोई भी डिस्ट्रैक्टेड, मतलब बाधित नहीं हो। और आपको ट्रूथ सीकर, मतलब जो सत्य के रास्ते पर जो हम चल रहे हैं, इच्छुक साधक लोग, उन लोग को कुछ एक चीजें बिल्कुल भी अपने जीवन में मिस नहीं करनी चाहिए। रोज मेडिटेशन अपना व्यक्तिगत रूप से भी और ग्रुप मेडिटेशन भी, अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और स्पिरिचुअल गैदरिंग जब भी होती है उसमें शामिल होना, ये तीनों चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। और याद रखिएगा कि गंभीरता और निष्ठावान होना हमारी कुंजी है। सिंसेरिटी अर्थात निष्ठावान, हम अपने प्रति ईमानदार रहें, और सीरियसनेस अर्थात हम संजीदगी से उसको करें। नियमित जब कर रहे हैं तो उसको संजीदगी से करें। तो ये दोनों हमारी की हैं, कुंजी हैं। और याद रखिए जितनी भी इच्छाएं हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़ी इच्छा आपकी सत्य की ओर होनी चाहिए। उसकी तीव्रता, उसकी गति आप पे ही डिपेंड है, और आप किसी भी ऐसी बाधाओं से अपने में रुकावट मत डालें। So the practice of the golden middle path is very much essential. Every day, yes, you check that, are you getting distracted? It is a self-check we have to do. Okay, am I getting distracted or am I in the path of the truth? So only the self-check. That's why the journaling is very important. You know, the more you journal, the more you write down your feelings, your emotions, your desires. You write down, then it acts like a self-check. And you have to check that, are you getting distracted? Yes, unconsciously, many people get distracted. They come into the spiritual path, they are doing meditation, but unconsciously, without their own knowledge, they think they are practicing sincerely, they think they are in the right path, but they get distracted unconsciously. So this self-check, every day self-checking, every day questioning yourself, what is nitya, what is anitya, what is truth, what is untruth. So when you question these fundamentals of life every day, then you stick onto the path, my dear friends. And practicing the golden middle path is very, very important. What is golden middle path? Golden middle path means you are exactly in the middle. You are not too much into this, you are not too much into that. You are not too much into the left, you are not too much into the right.
You are not too much into the spirituality, you are not too much into the physicality. Exactly 50%. 50% spirituality, 50% physicality. That means you take care of your family, you go to job, you take care of all the aspects of what the dharma you need to do, of the duties you need to do. But at the same time, 50% your focus should be on self-realization. So when your priority number one is enlightenment, and you are fulfilling all the roles and responsibilities equally, then you are in the golden middle path. So to practice golden middle path, it's not so easy for the beginners of meditation. But through awareness, the more and more you meditate sincerely, regularly, the more you read books, the more you do the Sajjana Sangatya, then your awareness increases. With more and more awareness, then you will be able to practice the golden middle path, where you are not running away from your responsibilities. You fulfill all the responsibilities, but still your priority is to know the truth. तो सर ने कहा कि अपने इच्छाओं के प्रति आपको बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए कि आप किससे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, और हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम गोल्डन मिडिल पाथ अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाएं। इसके लिए आपको रोज अपने आप को चेक करना है। इसीलिए मैं जर्नलिंग करने के लिए कहता हूँ कि आप अपनी इच्छाओं, अपने इमोशन, जो भी आपके दिन भर में जो आपकी इच्छा या वासना आ रही है, आप उसको लिखें। तभी आप समझेंगे कि आप में क्या रुकावट आ रही है। क्योंकि कई लोग बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, पर अनकॉन्शियसली ऐसी डिजायर के द्वारा, ऐसी इच्छाओं के द्वारा वो बाधित भी होते हैं। तो रोज अपने आप से पूछें क्या नित्य है, क्या अनित्य है, और इसके साथ ही गोल्डन मिडिल पाथ को आप फॉलो करें। इसका अर्थ है न बहुत ज्यादा संसारिक होना है, ना ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आजीविका को न कमाएं या अपने परिवार का ध्यान न करें, वो आपका धर्म है। पर जब आप काम करें, अपने परिवार की देखभाल करें, उसी समय आपको अपना ध्यान अपने सेल्फ रियलाइजेशन पर भी फोकस रहना चाहिए। आपकी पहली प्रायोरिटी एनलाइटमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भी आपको पूरा करते जाना चाहिए। जो नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत कठिन होता है। पर जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, मेडिटेशन वगैरह, सज्जन सांगत्य, इन सब के द्वारा जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो आप मेडिटेशन को भी अच्छे से करेंगे, अपने ट्रुथ के रास्ते को भी फॉलो करेंगे, और अपने कर्तव्यों को भी पूरा कर पाएंगे। अपने कर्तव्यों से भागकर सत्य की तरफ नहीं बढ़ना है, बल्कि दोनों को संतुलित करते हुए अपने शैने शैने अपने यात्रा की ओर बढ़ना है। पर पहली प्रायोरिटी आपकी आध्यात्मिक यात्रा ही होनी चाहिए। Okay, friends, I think that's very intense today to understand and grasp and to integrate. So I think we will consolidate the today's session with this session. And I know you might be having some questions and you might want to clarify certain things. So tomorrow we will allocate the time to do the Sajjana Sangatya debate, spiritual debate, question and answers. And so like this, we will take a topic, we will understand it, we will consolidate it, we will integrate it, and then we go to a new topic. So there's more interesting topics coming in this season. So we'll discuss more about the duties, what to do. There is actually two important things every person has to understand. The effort of every enlightened, the effort of a person in the path of enlightenment is only two things: what to do, what not to do. Right? So we will discuss all those things in this journey, in this 11 days journey. And also we'll discuss about the vasanas. We'll also discuss about different types of dharmas, the duties. So interesting things will come up as we progress. But this is the very fundamental essence. If you are sincere, the reason I want to take this as a first topic is this session is only for sincere seekers. If you are sincere, if you are very much that your priority is only enlightenment, then at least you have to be authentic to yourself. Yes, my priority is sincerity. My sincerity, my priority,
is towards enlightenment. Then if your desires are for name and fame, if your desire is for power, if your desire is for sex, if your desire is for food, then don't waste your time in this Gyan Bharat session. So this Gyan Bharat is for enlightenment. So that's the reason I want to take this topic as a very first tip. At least be authentic to yourself. Okay. Thank you very much. Namaste to all of you. Thank you, sir. Thank you. तो सर फ्रेंड्स, सर ने कहा है कि मैं जानता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं, पर फिर भी यदि कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं कल का आप लोग के लिए इनवाइट करता हूं कि कल सज्जन सांगत्य है, हम स्पिरिचुअल डिबेट करेंगे। आप लोग को जो भी कुछ पूछना हो तो कल आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपने ऊपर मेहनत करिए और सबसे मेन चीज जो आपकी कोशिश रहनी चाहिए अपने एनलाइटमेंट की तरफ, उसमें एक मुख्य हमारा दुविधा आती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अपने वासनाओं और अपने धर्म के बारे में भी जानेंगे कि हमको कौन कौन से धर्म का पालन करना है। और यदि आप अपने प्रति ऑथेंटिक नहीं है, अपने प्रति निष्ठावान नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम हम सिर्फ उन ट्रूथ सीकर लोगों के लिए रखे हुए हैं जिनकी पहली प्रायोरिटी अपनी एनलाइटमेंट है और जो ऑथेंटिक है। तो अपने प्रति ईमानदार बनिए और कल हम क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा आपके आंसर्स देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आज डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में नहीं डाल पाई हूँ, मैं अभी डाल दूंगी, आप लोगों को मीटिंग आईडी वगैरह मिल जाएगा। पर जब आप लोग ने लिखा था, यूट्यूब फ्रेंड्स वालों को बोल रही हूँ, तब ऑलरेडी यहाँ पे 300 थे ही नहीं जगह, तो मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं लिख के भेजा। तो आप लोग लिख लीजिए 4300394443, ये मीटिंग आईडी है, और 4444 पासकोड है। और मैं फोन नंबर वगैरह सब डाल दूंगी थोड़ी देर के बाद, थोड़ा बिजी हो गई थी तो नहीं डाल पाई। यस पूजा, कुछ है क्वेश्चन वगैरह? नीता जी, 2-3 बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो ले लेते हैं। और एक बस रिमाइंडर मैं कराना चाहती थी सबको कि कल अब हमें पता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो नीता जी ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है आप सब लोगों के साथ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप प्लीज उसे एक बार रीड कीजिए। उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि आप क्वेश्चन पूछने से पहले उसे लिखें, उसे ड्राफ्ट करें, ताकि आपका क्वेश्चन वेल फ्रेम्ड हो, उससे सब लोगों को बेनिफिट मिले। सो दैट्स ऑल, एक रिमाइंडर है आप सबके लिए। जो क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब पे भी और इधर भी बहुत ज्यादा नहीं है, पर बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे कि जब फूड के बारे में डिस्कस हो रहा था तो क्वेश्चन पूछा गया था कि फिश ऑयल खा लें क्या, लाइक ओमेगा 3? बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं लेती हूँ। मुझे कितने बार डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है फिश ऑयल, बिल्कुल नहीं, आखिर वो फिश से बन रही है, तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और हाँ, एक ने पूछा व्हाई वी ड्रिंक वाटर बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन। यस, अभी जैसे लाइट एज चल रहा है और 2033 तक के बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी पर आ रही है, तो जब हम इतना टैप करते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो ये जो हमारा थ्रोट चक्र है उसमें कभी कभी कुछ खांसी या सूखापन लगता है, तो पहले आप पानी जरूर पी लीजिए, ताकि प्यास के कारण आपका ध्यान भंग ना हो, है ना। और मेडिटेशन के तुरंत बाद इसलिए पीने के लिए बोलते हैं क्योंकि कई बार हम मेडिटेशन में एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह भी करते हैं, तो जैसे हम पानी पीते हैं तब हम अपने बॉडी से ग्राउंडेड हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ग्राउंडिंग के लिए आपको पानी पीना जरूरी है। और वैसे भी इतनी देर के बाद थोड़ा गला भी सूख जाता है, और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो पानी कम पीते हैं और मेडिटेशन बहुत करते हैं तो उनको हेडेक होता है, या हमारे कोई ग्रुप था, उनको और भी कई प्रॉब्लम्स होते थे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। तो हाइड्रेशन आपके वाटर का हमेशा अच्छे से रहना चाहिए जब आप ज्यादा देर तक के मेडिटेशन कर रहे हैं। थैंक यू नीता जी। एक और क्वेश्चन था जो चैट में आया था, किसी ने पूछा था कि जब डिजायर्स के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा था कि डिजायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मतलब ट्रेवल करने का डिजायर जो होता है, इज इट ग्रीड? डिजायर टू
ऐसे to ट्रैवल explore का? the world, like travel करना, you know, घूमने जाना different countries में या नहीं नहीं within नहीं, country. देखिए आप बिल्कुल जाइए, बोलते हैं नेचर के पास जाना चाहिए, पार्टीज में नहीं जाना चाहिए ना। नेचर के पास तो जाने के लिए खुद सर बोलते हैं, हमारे पत्री सर लेके जाते हैं, कहते हैं कि आप अगर 1000 बुक पढ़ लें उससे ज्यादा बेहतर है कि एक यात्रा कर लें, क्योंकि यात्रा में जितना आप अनुभव करते हैं उतना बुक पढ़ने में नहीं करते हैं। तो यात्रा करिए पर पार्टीज में मत जाइए ना, नेचर के पास जाइए आप। That was it. एक हैंड रेज है राजेंद्र जी का। हाँ राजेंद्र जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाँ, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ नीता मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो चक्कर खा गया कि इतना आप ट्रांसलेशन इतना परफेक्टली, मैं तो सर की इंग्लिश नहीं लिख सकता, वो जो बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में उनको, मैं उनकी स्पीड को मैं मैचअप नहीं कर सकता। आप कैसे इतना याद रख के ट्रांसलेशन करके इतना परफेक्टली बता सकती है, अजीब है। दिस इज जस्ट वंडरफुल, मानना पड़ेगा मैम। थैंक यू। ये आप कुछ टेक्निक तो बताइए हमें भी, कैसे आप कैसे लिख सकती है इतना फास्ट? आप सेवा में आइए ना सर, आपके पास कोई एक अलग से एनर्जी आके करवाएगी काम। हाँ हाँ, मैं नहीं समझा। अगर आप सेवा करते हैं ना तो आपकी एनर्जी के साथ कोई और एनर्जी भी जुड़ती है ना सर, तो कोई एनर्जी है ना। हाँ, राइट। मस्ट बी ट्रेमेंडस, कोई बढ़िया एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। जी जी, नहीं तो मैं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। शुक्रिया, राजेंद्र सर, बहुत अभी फिजिकल रिट्रीट भी बस 2-4 दिन में हम अनाउंस कर देंगे, काम चल रहा है और चाहते हैं कि इस बार बिल्कुल आप फिजिकल रिट्रीट में भी आइए। जरूर, है ना। एक ही रिट्रीट होगी फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन होने वाली है इस बार की रिट्रीट। डेट्स और वेन्यू पूरा फाइनल के करके 2-3 दिन में हम लोग आपको डिस्क्लोज कर देंगे। वो बैंगलोर होगा या कच्छ भुज में? हाँ बैंगलोर होगा। ओके। आज ही डिसाइड हो गया, बैंगलोर है, और डेट्स वगैरह और पूरी हर चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल, आप सितंबर के मंथ में तैयार रहिए। सितंबर में एक बहुत अच्छा ज्ञान भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। अच्छा, ओके मैडम, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, कल भी सर का ही हमारा डे 3 का है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से फॉलो करिए। जो भी डाइट, मेडिटेशन और जर्नलिंग के ऊपर सर ने पॉइंट्स बताए हैं वो हमारे लिए ही है। ये नहीं कि सर को हमको नहीं दिखाना है तो हम अपनी काम चोरी करके उसमें नहीं करें। अगर आप सिंसियरली आप इसमें बेनिफिट पाएंगे तो सर हो सकता है हमारी सिंसियरिटी और सीरियसनेस को देखकर थोड़े दिन और भी बढ़ा लें और हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें इस रिट्रीट का। तो मैं भी फॉलो कर रही हूँ, आप लोग भी फॉलो करिए। और जब आज हमने फूड के ऊपर इतना सब कुछ सुन लिया है तो मेरे ख्याल से अब फूड के प्रति आसक्त होना हमको कम करना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। तो सभी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पानी पीजिए, खूब मेडिटेशन करिए और जर्नलिंग जरूर लिखिए ताकि आपको अपनी कमियों के बारे में पता चले। कोई भी क्वेश्चन होगा तो अगर आपको कल पूछना है तो जैसे पूजा जी ने बताया कि बिल्कुल टू द पॉइंट पूछना है। और प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो आपके एक्सपीरियंस है उनके बारे में मत पूछिए कि पैर दुख रहा, हाथ दुख रहा, बिल्कुल भी मत पूछिए। देखिए हजारों ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो जब वो ब्लॉकेजेस खुलेंगे तो पेन होगा। नो पेन्स नो गेन्स। जब आप अपनी आत्मा को जन्म दे रहे हैं तो आपको दर्द सहना ही पड़ेगा। जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं वो सारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं, तो पेन होना स्वाभाविक है। तो सार्थक क्वेश्चन पूछिए और छोटे क्वेश्चन पूछिए, और जैसा कि पूरा हमने डिटेल में दिया है उसको जरूर पढ़ लीजिए। अपनी पूरी आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत लंबा चौड़ा करके मत बताइए। न सर को इंटरेस्ट है न ही किसी और के पास टाइम है, सभी की समय बहुत कीमती है, तो दूसरों का समय आप व्यर्थ नहीं गवाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं 4 बजे, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासकोड। ठीक है। Thank you Pooja, thank you friends, thank you Mahi, thank you Padmini, thank you, bye bye. Bye bye.